We have amongst us members of faculty, students, staff, and other guests of IIT Bombay. We welcome you all to this wonderful gathering. Let me take this opportunity to welcome amongst us our speaker for the day, Sri Tarek Fatah, an international journalist turned best-selling author. Sri Tarek Fatah was born in Karachi, Pakistan, where his family had settled following the partition of India. Although he graduated with a degree in biochemistry from the University of Karachi, he entered journalism as a reporter for the Karachi Sun in 1970 and was an investigative journalist for Pakistan television. Later, he left Pakistan and is currently settled in Canada. He has hosted several TV and radio shows and has authored opinion pieces in several international publications, including Time magazine. He has been amongst the most vocal voices on global terrorism. He is also an expert in cross-border politics between India and Pakistan, internal politics of Pakistan, including Balochistan movement. He is the author of Chasing a Mirage, the tragic illusion of an Islamic State, which has been shortlisted for the prestigious Donner Prize in 2008-9. In 2010, his second book, titled The Jew is Not My Enemy, has won the Helen and Stan Vine Canadian Book Award on Politics and History. He is the founder of Muslim Canadian Congress and served as its communication officer and spokesperson for several years. We are honored and privileged to host Mr. Tarek Fatah amongst us. Now, I would like to invite Professor Varadaraj Bapat to felicitate our chief guest with token of love. I invite him to grace the stage and deliver his speech on India and Pakistan in the context of politics and terrorism. Please welcome him to the stage with a round of applause. गुड इवनिंग, नमस्कार। मैंने सुना किसी हिंदुस्तानी मौलवी ने फतवा लगाया है कि जो एक नारा लगाएगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह करता हूं, भारत माता की जय। है गालो ना? मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो भारत माँ की बगलों में रहने वाले हैं वो अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुझे समझ नहीं आती बात कि ये कौन बदनसीब है जो हिंदुस्तान में रह के फतवा लगाते हैं कि जिसने भारत माता की जय कही वो मुसलमान नहीं रहेगा। ये ऐसे लगता है जैसे मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइज चला रहे हैं कि हेडक्वार्टर से अभी नोटिस आया कि इसको अलाउड नहीं है। भैया ये इस्लाम है, ये तो कुरान नाजिल होने से पहले लोग मुसलमान हो रहे थे। तुम्हारी जैसी बदशक्लों के लिए वेट कर रहे होते तो यहां कोई भी नहीं होता। मुझे आप बताइए कि जिस टाइप के मौलवी घूम रहे होते हैं, जैसे मोदी साहब ने भी कुछ अजीब से टोपी वाले बुलाए थे अभी लास्ट वीक, अगर ये हमारे मुसलमानों के लीडर हैं तो कोई मुसलमान होता है यहां? अरे देख के आदमी डर जाता है। कोई सुंदर शक्ल वाला आदमी, कोई अच्छी सोच वाला आदमी, कोई बैठ के गौर करने वाला आदमी कि जिस मजहब इस्लाम में मोहम्मद ने कहा कि मैं हिंद से नहीं हूं लेकिन मुझ में हिंद है, जिसके अली ने कहा कि मीठी मीठी हवा आती है जिसमें खुशबू है हिंदुस्तान से,
अरे तुम वहां आके तुमको पनाह मिली, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को पूरे अरबों ने कहा हम कत्लेआम करेंगे। उसको जिस मुल्क में राजा दाहिर ने सिंध एक हिंदू राजा ने पनाह दी, तुम उसको शुक्रिया कहने के बजाय दादागिरी करते हो। जिस मुल्क में, हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली मस्जिद बनी, मक्का से पहले किरमान में, केरल में बनी 629 ईयर में, वहां ये मौलवी क्यों नहीं जाते? ये जाते हैं कुव्वत इस्लाम मॉस्क में दिल्ली में, कि 26 जैन टेंपल तोड़ के कुतुब मीनार बनाया था। तो नीयत बद किसकी है? भारत माता की नीयत बद नहीं है। तुम्हारे मन में कोई गड़बड़ है जो तुम्हें भारत माता की जा कहते हुए कुछ दिल को बुरा लगता है। अरे अपनी नीयतें साफ करो। इस सरजमीन पे जहां मुसलमानों को हिंदुओं ने खुले हाथों से कहा कि आ जाओ, यहां तो तुम्हारे जुल्म के सहने वाले पारसियों को भी हमने बिठाया है, तो दाऊदी बोरा भी आए, शिया भी आए। ये पूरी इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां शिया अपने आप को शिया कह सकता है। सही है नाज़िम नकवी साहब? अरब दुनिया में शिया नहीं रह सकता था। शिया को कहते हैं ये यहूदियों के एजेंट हैं जो मुसलमान बने हुए। जगह जगह काट माट के पैगंबर रसूल की फैमिली को कत्ल करने वाले उमय्यद डायनेस्टी बना गए और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के मेंबर्स सिंध में राजा दाहिर के पास ठहरे, इनको वापस लेके आओ। और यही यूपी का मुसलमान कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है और राजा दाहिर दुश्मन। तो भैया उल्टी गंगा बह रही है इस मुल्क में। मुसलमानों की लीडरशिप इंतहाई नाकारा है और जो शरीफ लोग बचे हैं वो अपनी इस परेशानी में रहते हैं कि अगर सच बोल दिया तो रात को दावत नहीं आएगी खाने पे अगली, और कुछ नहीं है सेक्रीफाइस करने। बात लेक्चर की थी आज इंडिया और पाकिस्तान की, एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंट दैट यू अंडरस्टैंड। As Indians, we need to understand what is Pakistan. Pakistan is not a state. Pakistan is a state of mind. That state of mind can exist in the mind of Idi Amin or Zakir Naik. It doesn't need visas, it doesn't need passports. It just needs to be a disease that says that I am superior than someone else, that I am so good that I cannot live as a minority under a majority. इस मुल्क की, but the real thing that I regret about what has happened in 70 years in India is there is no critique on Jinnah. In fact, I feel there is more critique and more negativity addressed towards Bapuji and Nehru than there is towards Jinnah. जिसने आपके बाजू काटे उसको तो कर दिया माफ आपने, और जिसको मार दिया किसी ने उसको आपने कहा इसी ने बनवाया पाकिस्तान। तो कुछ तो, why don't you guys in IIT? I mean, these top people envy you. For goodness sake, try to understand that your limbs have been chopped off. There is no Hind without Sindh. Either change your national anthem, or if you talk of Punjab and Sindh, then Punjab and Sindh have to be part of Pakistan, India. India as a civilization. The Indian national anthem is not just about a country or a republic. It is a civilization. It goes back 10,000 years. The Vedas come from Sindh, from the Indus River. This newly contrived Ganga Jamuna civilization is a post-1947 doctrine. The Mahabharata was not written on the Ganga. It was written in Punjab, right? Kurukshetra. Just because you put it in Haryana doesn't mean it's not Punjab. Darya se to pucho.
तो तू किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा पंजाब है। बोले नहीं है, हरियाणा हो गया हूं। How does a river know that the country has changed? That is where the Mahabharata was written. What was Ram's two sons' names? Love and Kesh, right? Kush. Oh, galti ho gayi, enna maaf kar diya karo, Musalman. And the cities? Kasur. Does a Hindu live there? No. Are you happy with it? Of course. You don't give a damn. You want to be CEOs, right? So your enemy breathes down your neck. It sends terrorists, kills you, and you can't even figure out whether they were 4 or 6. Right? And the discussion is who's going to pay for the cost. Do you think in Pakistan somebody is worried, oh, we've incurred a cost, what do we do about it? Oh, well, we have a discussion with the Punjab government and the federal government. No. It's run by the military, run by rogues, run by agents. And that's how they solve problems. You are discussing in the public as to whether the Punjab government is going to pay for the Pakistanis punching India in the nose, or whether it is the federal government. And they are comfortable with it. They're not even embarrassed that they're doing that. In fact, Pakistan then calls up and says, we have just sent 10 terrorists across the Kashmir. All of India is running around looking for terrorists. Who's paying for it? Do you think Pakistan sent a bill? No, they're having the last laugh. Why is Pakistan doing this? And what is Pakistan? The country that was Pakistan is today called Bangladesh. No, I'm not exaggerating. In 1946 election, there was only one province of India that elected Mr. Jinnah's Muslim League. That was Bengal. The Prime Minister of Bengal was Syed Soharwardi, Hussain Shaheed Soharwardi. Mr. Jinnah didn't want Bengal. They were too dark and too short. Who needs Bengalis? We need white people, you know, just like you guys need that Konsi cream hai? Huh? Fair and lovely. उससे पहले की बात है. We've always been looking for fair and lovely. So Pakistan doesn't want Bengal. So what do? They impose Urdu as the mother tongue of Bengalis. By the way, Mamata Banerjee also has been celebrating Urdu lately. Has she not? Is she looking for vote banks? Eh? So Pakistan was created by the Nawabs of UP, Bihar, CP and Bengal, the Urdu-speaking Nawabs of Bengal, who first partitioned Bengal in two in the early 20th century, if you recall. Instrumental behind that was the current great enlightened liberal Muslim, the Aga Khan, Ismaili Muslims, and the Ahmadi Muslims as well, who currently pass off as the liberals. They created Pakistan, which is Bangladesh. In what is now Pakistan, neither Punjab, nor NWFP, nor Balochistan, nor Sindh, Muslim League didn't have an election. So what did happen? You formed Pakistan by slicing of Bengal and cutting off Punjab into half, under the single condition that a Muslim cannot, by Islamic law, live under a Hindu majority or a non-Muslim majority. It's quite funny how Pakistan is lined up to live in the United States of America, which, by the way, they think that Muslims run America. Now the same principle that suggests you cannot live under Hindus is removed, and you want to live in UK or Germany or France, or as the great country in Europe, Brussels today has been finding out, the great love Muslims have for living under non-Muslims. East Pakistan goes away. The country, the place that did not want Pakistan is now being ruled by the people who came from Delhi, Lucknow, Patna, you know, not the Jalandhar or Ludhiana side people. They got riff-raffed as Punjabis.
The Urdu-speaking people came to Pakistan, took over the Sindh capital, Karachi, delegitimized the Sindhi, Gujarati, Kutchi, Memni, Kokani languages that were spoken there. A Hindu city within a year became a Hindu-free city. It was a Hindu majority city. So Sindh lost its language. Okay, I'll try to be louder. So now you understand that a genocide of languages has taken place, even in the category of Muslims. The Muslim is only a Muslim in North India or subcontinent if he or she is fluent in Urdu. If you are a Muslim and only speak Tamil or Kannada, of course you're not a top quality, Alfonso Mango. You're not that top. You're just one of those Keri type mangoes that fall on the floor. So these guys that you sent over to Karachi ruled Pakistan. 6% of the population, language became the language of Pakistan. If you recall, February 21st is the International Mother Tongue Day around the world by the United Nations. Are you aware why it happened? On February 21st, hundreds of Bengalis were shot dead in Dhaka by the Pakistan military for demanding that we can't speak Urdu, this is not a language. We want Bengali as the language of Pakistan and Bengal. They are the majority, 56% of the population. That is why today we have International Mother Tongue Day throughout the world. The annihilation of cultures, customs, and traditions is what happens when you create an Islamic state. An Islamic state today that everyone is familiar is ISIS, which does exactly the same things. Every historic tradition, thousands of years old buildings have been destroyed. People whose religion goes back thousands of years, the Yazidis, have been made into sex slaves and have been murdered in a genocide. That's exactly what the Pakistan army did in Dhaka and surroundings in 1971. I am sometimes surprised at the lack of information Indian young people have about the 1971 war of liberation by the Mukti Bahini and how Indira Gandhi stood up like Mr. Shastri before her and stood down the advice she got from Fakhruddin Ali Ahmad, the then President of India, and a large segment of India's Muslim population that supported lighter-skinned Pakistanis killing darker-skinned Muslims in East Pakistan. This is what the state of Pakistan is. It's a state of mind. It means that that valley and the passes that allow for 1,000 years the rape of India through Taimur and Babur and Ghazni, and earlier, a few centuries earlier, Ghazni, is what Pakistanis today think of India. If they don't admit to that, they are lying. If they've come here through the Aman Ki Asha Tamasha, it is just an ISI duping naive upper middle class Indians who just want to feel so good that they had a loving relationship with these wonderful writers who came from Pakistan. Absolutely delighted. If you notice that the lit fest that happen in Pakistan are usually Indian actors and dancers that are invited. The Karachi Lit Fest does not have a single word of Sindhi spoken. And Lahore, the historic capital of Punjab, does not have a single word of Punjabi spoken over there. So they get Sharmila Tagore instead, who hasn't written a book. Has she? No, she hasn't. But she's literature. But this stupidity of India looking at Pakistan as if someday they will understand galti ho gayi janaab. Have they ever recognized what it is, the hatred,
the institution of Pakistan has for Hindus or Buddhists or Sikhs or atheists or gays or lesbians or black people. You are being fooled by one of the most conniving institutions on earth, that is the Pakistan military and the ISI. Nobody can come to India without getting an okay from the ISI. Every Pakistani who comes here on a cultural mission and asks for your business card, make sure next time you give him the wrong one. Because it's going straight to the ISI. They don't come here out of love or anything. They have no connection with Indian civilization. If they came here for Islam, they would have gone to Kerala and visited the first mosque of Islam. Not a single Pakistani has ever visited. After all, Keralites look like Bengalis, don't they? Short, dark skin. Who wants to talk to them? They want the friends from Lucknow, the Nawabs of Awadh, my goodness, with an umbrella carrying and a horse behind them. Reminds you of the Shatranj ke khiladi, that scene where he says, Gori paltan aa rahi hai, Goron ki lal paltan aa rahi hai. The child runs to these two guys, plotting moves. They didn't give a damn. They were playing chess. They let the British come in, the French come in, and we know the result. But as long as there is Pakistan, there might not be a war, but every Pakistani military officer follows the doctrine of Ghazwa-i-Hind and the ultimate destruction of human civilization, which is a mission that most religious Muslims believe in, that their final flight to paradise. Many of you as Hindus have return tickets to come back. When we go on one-way flights. There is no coming back. And Muslim Sharia law, written long after Prophet had died, long after his biography was written, clearly states that the goal of every Muslim is twofold. One is to collect at, I'm forgetting the right name, the Beek, the city in Syria where forces will be ready to fight Rome, which is Europe, which already we know that the Islamic State is occupied and is doing in Brussels what every one of us warned the West, but we are considered as self-hating Muslims, so nobody listens to what. Maybe if we had a beard, and then I would have been invited with Mr. Modi's Sufi festival as well. But no, I'm too good looking to be considered an authentic Muslim. So one aspect of that war to annihilate human civilization as a favor to God is done. The other part is that the B-grade Muslims, after all dark skin, you will deserve the Ghazwa-i-Hind. The whites of Europe will get the prime battle. You will get the B-team battle, which is the Ghazwa-i-Hind. What is the Ghazwa-i-Hind? Ghazwa-i-Hind is Muslims shall invade India, Hind, and convert or kill every non-Muslim. Now, of course, nobody is going to tell you that, because India is infested with politically correct leftists, even though I'm a Marxist, but that is why I'm anti-Islamist. The belief that life on earth is like a transit lounge, and all of you have been through transit lounges. The only place you ever see in a transit lounge, or we look at, is the connecting flight time. I've never seen someone in a transit lounge saying, yeah, let me clean the floor. Yeah, toilet bade gande saaf karke aata hu main. No, that's not my business. I have to watch that connecting flight going from Bombay to Delhi, right? Ye baithe hue connecting flight to paradise. They don't give a damn what happens on this earth. They want to die. If you believe that life begins after death, then no amount of peace talks can convince you. अभी जिंदा ही नहीं हुआ है वो, अभी तो पैदा नहीं हुआ है भाई, अभी तो वो फॉर्मेटिव बटरफ्लाई का वो पहले क्या होता है, लार्वा होता है, ये लार्वा हिस्ट्री में चल रहा है मुसलमान. इनमें कोई अकबर तो पैदा नहीं हुआ,
उसको ऐसी पिटाई की, वो भागा, उसका देखो औरंगजेब निकला उसमें से. So the lack of Muslim leadership, of Muslims who would be able to say like Mansur Halaj said, told the Caliph, 10th century, I am the truth, I am God. उसने से गला काटो, उसने काट दो. The Caliph came to him and said, भाई, सूफी से, सूफी टोपी ओपी नहीं पहनते, ये डिजाइनर सूफी आए हैं अपने, ये अजीब गगरे पहन के यूं घूम रहे हैं. If you are a Sufi, why would you do this stupid dance? साले लड़कियों के फ्रॉक पहन के आ गए, चोगा लगाया हुआ घूमे जा रहे, और उसके बाद एंड में वो पैसे लेके चेक करके कहीं लेटेस्ट सैमसंग ढूंढ रहा. सूफी है तो सैमसंग से क्या ताल्लुक तेरा? तेरे पास सेलफोन होना ही चाहिए. इन सब को चल रहा है. Mansur Halaj, arms were cut off like Indian arms were cut off. They were stumps were burnt with tar. And then, मेरी आवाज नहीं जा रही सर? नहीं आ रही? तो ऐसी देख रहे आप लोग? मैं कुछ मैं दिलीप कुमार हूं क्या? आप बोले, आपने हक तो मांगे. अच्छा तेज बोलता हूं, एक सेकेंड. अब मंसूर हलाज ने ये बोला कि मैं, क्या माइक दे दो यार मुझे ऐसा लगता है सिलीन डियोन की तरह खड़ा हूं मैं. अब ठीक है? क्या कहते हैं? भारत माता की गला साफ. So Mansur Halaj was given a day by the Caliph to say, उसको बोल दो सॉरी वॉरी यार मैं जानता हूँ, you're right. He said no. Next day he was beheaded on the bridge of the Tigris in Baghdad. Look up Mansur Halaj. He refused to say that I am not the truth. Because there is an essential thing about this philosophy. He said, I am God, meaning God is within me. It's in my lungs, it is in the air, it is my eyes, it is my atom. भाई यार यहाँ सामने आ जाओ, ऐसे शर्म से पीछे क्यों बैठे हुए हो? अगर सुनाएंगे. अच्छा आप लोग मुझे देखते रहे, फोटो खींचे, मैं बोल रहा हूं. यार जाने दो ना, मिट्टी पाओ, कहां चक्कर में फंसे हुए यार. So Mansur Halaj gets beheaded, and it is the death of intellect in the Muslim world. The rationalists of Islam had died in the 9th century. The rationalists of Islam, which were called the Mutazilites, who based everything on Indian numbering system. By the way, every Quran on earth, in India, everywhere, has Hindu numerals. Tell that to your friend next time somebody says. Quran as a book is numbered by Indian numbers. ये वो तलाक है जो हो नहीं सकती. जब हमारी किताब में आपके नंबर डल गए तो आप कौन हटाएगा? ना ये मुल्ला हटा सकते हैं, ना अपने तुगाड़िया साहब बहुत डांटते हैं मुसलमानों को, वो भी नहीं कुछ कर सकते. बट आई एम डाइग्रेसिंग, पार्डन मी. थोड़ा सा बुढ़ा भी हो गया, 66 का हूं तो माफ कर देना. पॉइंट बीइंग that Islam has lost its ability to critique its flaws. It has lost its ability to look into the mirror and look for the pimples that are spot dot on their face. Invariably, the Muslim will say, it's not my fault, it's somebody else's. Invariably, even this morning, when 26 people were blown to bits and hundreds injured in Belgium, there were white leftists and liberals saying, please don't mention Islam because this is what ISIS wants for recruitment. मैंने उस साले को, गोरे को ट्वीट किया कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, ब्रसल्स है तो किसी बुद्धिस्ट नहीं मारा होगा. इसका कोई, वो मुसलमान इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और बुद्धिस्ट नहीं है तो साला कोई बहाई होगा, बहाई नहीं है तो किसी को पारसी वारसी को पकड़ लो, क्योंकि मुसलमान ने तो कभी बम मारा ही नहीं है. मतलब ये हमारे साथ क्यों ना, हम तो
सिर्फ बकरा ईद को बकरा काटते हैं, 15-20 बच्चों को लेकर उसकी छुरी मार देते हैं, तो खून तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एब्सर्डिटी देखिए कि these are left-wing white people, including a Muslim reporter on CNN International all this morning, if you watched, who was saying it speaks to the despair of inner city youth. एक तो मुझे inner city youth समझ नहीं आता, हम भी inner city के youth हैं, ये outer city youth कौन सा होता है? youth का तो काम है city में घूमना। उसने कहा she is a North African, French speaking, Muslim journalist who's black without a hijab, therefore she is exotic and therefore she could get away with it. She kept repeating that this was, we really can't tell if this is an act of terror. Oh, it was so lovely, it was so pleasurable. First I thought it was some balm smoke coming, or lobam का powder निकल रहा था वहां से। कि साला मुझे क्या पता ये टेररिज्म है? अरे कितना झूठ बोलोगे कि बम फट गया, लोग मर गए, वो भी कह रहे let us see, let us wait and see. भैया 15 साल से wait and see कर रहे, अब तक कह रहे 9/11 यहूदियों ने किया। So we are at a state where everything rotten in this kingdom of Islamdom was created on August 14, 1947. You have to understand this very clearly, that the creation of the Islamic State of Pakistan is the creation of the Islamic State of Syria and Iraq, is the creation of Taliban, is the creation of Al-Qaeda, is the creation of Boko Haram and Al-Shabaab. Otherwise, tell me, why in the hell would the Somalis of Al-Shabaab wear shalwar kameez? Have you ever thought why Major Nidal Hassan, when he was arrested, was wearing shalwar kameez? Look into these finer points with your third eye, which every Indian, including me, has. हम लोग की बुद्धि में वो है चक्रा के ढूंढो, इसमें खोज निकालो, इसमें है क्या? हम तो वो गोरे नहीं है क्या? If it doesn't fit, it doesn't fit. Glove doesn't fit, तो साला किलर को छोड़ दिया बाहर। उसकी बात कर रहा हूँ, वो कौन था? मर्डर। हाँ, it doesn't fit. हम पूछते रहते क्या है? What has happened with us Indians is that we are not analyzing things to come to deductions without having hated ourselves. In addressing Pakistan and the Muslim question, we have succumbed to our inner deep suspicion and contempt for the fellow Muslim, which is not the Hindu way, which is certainly not what the Vedas say, which is certainly not the way to improve your future or to answer the questions. As long as there is India, for all times to come, you will have about 13 to 20% of your population which will believe in a religion remarkably different than yours, and to whom you will have to ask a simple question, फेरे तुम भी तो लगाते हो, तुम counter clockwise लगाते हो, हम clockwise लगाते हैं. In Makkah, you worship a stone, we worship a stone. तुम लिंगम के पास जाते हो, हम योनि को पास जाते हैं. फर्टिलिटी गॉड्स हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं. तो जब मोहम्मद ने कहा कि गाय का गोश्त खाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये खुदा ने बनाया है जानवर दूध के लिए, और दुनिया का कोई मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता सिवाय इंडियन के, तो आपकी जिम्मेदारी, आप मुसलमान से प्यार से पूछें कि यार सूअर नहीं खाते हो तो गाय भी ना खाओ. जब तुम्हारे मोहम्मद ने कह दिया कि ये खाना नहीं है ठीक, ये पॉइजनस है तुम्हारे लिए, तुमसे जो ऊपर वाले ने दूध देने के लिए जानवर बनाया, ये कभी आपने बहस सुनी इंडिया में? ये ना कोई मुसलमान उठाता है ना कोई हिंदू उठाता है, क्योंकि इस डिबेट में हेट्रेड आ गई. सो जो बुद्धा की बात है, जो गांधी की बात है, जो कौटिल्य की बात है, कल देख के आऊं प्ले भी, व्हाट एन इनक्रेडिबल मैन, व्हाट एन इनक्रेडिबल चाणक्य, वाओ, दैट गाय, there's no replacement of him. But the wisdom that you have, you should deploy. And only Indians have the wisdom to deploy, not the Chinese, not the Iranians, not the Russians.
because you measure time on a different scale. उनकी गिनती ट्रिलियन पे बंद होती है, आपकी ट्रिलियन से शुरू होती है। वो कहते 4 बिलियन ईयर्स, आप कहते ये तो आंख का झपका है। वो गोरा कहते हैं कितना लंबा है ये, हिंदू कहते जब तक चलेगा चलेगा। वो फाइनाइट्स में देखते हैं, आप इन्फिनिट में देखते हैं। आपका धर्म इवॉल्व होता जा रहा है, उनका रुक जाता है। उनकी एक किताब है, आपकी 50,000 है। खिलजी ने यही बोला ना कि नमला में क्या है ये, बोले 1 लाख किताबें। बोले इतनी इसकी फोटोकॉपी क्यों बनाई हुई? बोले साहब ये इतनी किताबें हैं। बोले इनके पास इतनी किताबें तो मेरे पास तो एक है। वो समझा कि एक ही इनकी किताब है, उसकी कॉपी बना के रखी हुई। 100,000 बुक जलाओ साले को, हम एक पे चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि एक सोसाइटी में एक पहलू है एक किताब का, दूसरा है 50,000 का। एक का एक खुदा है, दूसरे के कई करोड़ वेरिएशंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं उसी ब्रह्मा के जिसको वो खुदा कह रहे हैं। इट्स हिंदुइज्म इज मोनोथीइज्म। ये तो मुसलमान गलत कहते हैं कि दिस इज पॉलीथीइज्म। बट देयर इज नो दारा शिको अलाइव टुडे जो बैठ के ये बात कर सके। आपकी बदनसीबी है कि आपके शहर की सबसे बड़ी सड़क दिल्ली में औरंगजेब के नाम हो गई, और मुझ जैसा एक पाकिस्तानी पैदा हुआ मुसलमान आके कह रहा है कि मैं। तो क्या हिंदुस्तान में मुसलमान और नहीं थे? आप ये सोचिए कि 70 इयर्स तक क्यों नहीं किसी ने कहा, जो सरदार सिख हमारे दोस्त जिनके गुरु को इस शख्स ने मारा, उन तक में हिम्मत नहीं हुई कि बदलो इस बुरे आदमी का नाम। एक आदमी जो अपने बाप को मारता है वो हीरो है हमारा। बाप, बेटा, भाई, बहन, किस आदमी की गर्दन काटी? दारा शिको की, जिसने उपनिषद को ट्रांसलेट किया, पर्शियन में वहां से भिजवाया, फ्रेंच में हुआ, वहां से इंग्लिश में कराया। उस शख्स की गर्दन काट दी एक आदमी ने, और हिंदुस्तान उफ नहीं बोला। तो वो आपकी खामोशी आपको बिट्रे करेगी। सच जो है दैट इज योर मोटो, वो एक तो याद नहीं रखना पड़ता। यू डोंट हैव टू एक्ट आउट, वो फास्ट मेमोरी में रहता है हर वक्त। यू नेवर हैव टू रिमेंबर दैट ट्रूथ शुड ट्रायम्फ। इसीलिए औरंगजेब की जब सड़क का नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो गिरी हैं जो एमपी और दिल्ली डीसीएमपी क्या है, डीसीएमए उन्होंने किया, तो लोगों ने कहा औरंगाबाद का भी नाम बदलो। मैंने उन्हें समझाया कि जब विक्ट्री होती है तो उसको जरा सेवर करते हैं। विक्ट्री के बाद दुश्मन को माफ किया जाता है। जो लोग टोटल विक्ट्री चाहते हैं उनको टोटल डिफीट मिलता है। ग्रेस ये है कि हमने तमाचा मारा, हमने बता दिया इस कमीने की हैसियत क्या है। दिस मैस मर्डरर्स नेम इज रिमूव्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जब तक दिल्ली रहेगी ये याद रहेगा कि औरंगजेब का मुंह काला किया हमने। आप औरंगाबाद का नाम बदलो ना बदलो हमें क्या पता, खैरात में दे देंगे शहर का। जा तू औरंगजेब से प्यार है ना, कर ले, हमें क्या था। हमने अपना पॉइंट दिखा दिया, हम हिंदुस्तानी हैं। हमने अपने दरवाजे खोले ज़ोरेस्ट्रियंस के लिए, मुसलमानों के लिए, बोरियों के लिए। कौन कौन नहीं आया। वो साला अलेक्जेंडर भी आ गया, उसको ठीक पाट के मार के भेजा वापस। सब आए सब गए। ईरान में 25 साल में फारसी जबान की लिखी जो स्क्रिप्ट थी वाइप्ड आउट। 10 साल में इजिप्ट का मजहब गायब हो गया। हिंदुस्तान में 1000 साल तक रहे मुसलमान तो रहे, लेकिन हिंदुस्तानी तो नहीं गई ना। एंड में तो माएं तो सारी मुगलों की हिंदू ही थी ना, तो किससे इनकार है। तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया की बेसिस पे आप पाकिस्तानियों को इंडियन समझिए पहले, तो उनसे ज्यादा इंडियन आप नहीं हो सकते। सीरियस, ये तो डिफॉल्ट के इंडियन है।
आप तो मणिपुर से आए इंडियन बनने के लिए यहां, या कोई तमिलनाडु से आए, वो तो रहते इंडस में हैं, वो कहां के इंडियन नहीं हुए? पहले ज़हन में रखिए कि दे आर इंडियंस हु हैव लैप्स्ड मेमोरी। अच्छा, आपके यहां जो डिसेबल्ड, एक आध आपकी फैमिली में डिसेबल्ड होता है ना, उसके साथ नाराजगी तो नहीं करते आप कहते हैं यार इसको रखो, ठीक हो जाएगा बड़े होकर। ये भी ठीक हो जाएंगे एक दिन। जिस दिन बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हुए, वो हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे। वो नेपाल, भूटान, बर्मा, सिलोन, ऐसे बड़े छोटे मोटे बड़े भाई के बड़े रिश्तेदार होते हैं, ये सब हिंदुस्तानी हैं। बंगाल है या श्रीलंका, ये हमारे रिश्तेदार है ना। तो ये भी भूटान रखा है तो एक पंजाब रख लीजिएगा, एंड में उन्हें खुद ही समझ में आएगा यार की कितना है पार्टीशन कराया, खुद मिल जाएंगे। और सिख और मुसलमान आपस में तय करेंगे कि वो खालिस्तान वालों ने बोला कि सर आप सपोर्ट नहीं करते हैं खालिस्तान में, मैंने कहा बिल्कुल करता हूं, लाहौर को उसका कैपिटल बना दो। ये तो गलत बात है। मैंने कहा हाँ, ISI ने कहा है कि अमृतसर को बनाओ। अगर अमृतसर ही कैपिटल था तो रंजीत सिंह क्या कर रहा था वहां लाहौर में? ननकाने में क्यों पैदा हुआ? ये तो मक्के से वो लोग मुसलमान नहीं रहेगा। जब ननकाने में सिख नहीं है तो कैसे सरदार कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान इंडिया में चाहिए? अरे वहां जिसने कब्जा किया उससे लड़ो ना जाके यार। वो बब्बर खलसा वाले कहां, यहां कोई है बब्बर खलसा वाला? यार कोई बात तो करो। सर जी हमें चुप करके बैठे हो पीछे। नहीं एक बैठा है सादा यार ना। जय हिंद। सो पाकिस्तान इज a disabled close relative at worst. At best, it is India. We have rented it out for some experimentation to be done over there. That experimentation, inshallah, will soon fail. And all these people who went from UP and Bihar to civilized us Punjabis, they will be coming back very soon with Altaf Hussain and his Nihari. So, what is your role as future leaders of India? You have to eliminate hate from your heart. You cannot exist by saying, asking these rhetorical questions about Muslim demography, I go there, why do this? No, don't try to be smart. If you have any contempt or hatred for a Muslim or Islam, you can't be a solution. Then go join Bajrang Dal or some other and Kabristan, Pakistan, जो नारे लगाते रहो, कुछ भी नहीं होगा. And you'll be reduced into an angry person who will beat up his wife. Unless the wife is there and she beats up the husband. You cannot fight evil with hate, for goodness sake. अपनी किताबें पढ़ो. I mean, your teachers have said you cannot have hate. But I see that because so many Indians hate other Indians, especially if they are poor, especially if they are kaam karne wali, especially if he's an auto rickshaw driver. The class system has divided India. It's not the caste, it's the class. You have to be the #1 country in the world. Only India can lead the world, not China or the United States, anyone. And why? Because it is only India that has 26 languages and 400 dialects, where nobody makes fun of another guy's accent. This is the only country where there are about 20 accents in the same room. तमिल अलग बात कर रहा है, पंजाबी अलग इंग्लिश बोल रहा है, बिहारी का तो समझ नहीं आता। और वो सब साले गले में हाथ डाले घूम रहे होते हैं। दूध गोरा देखता, too many gays in this room. मैं कहा नहीं यार, ऐ साडी यारी है, असी तो हाथ मिला के कंधे पा के चलने आ। It's not about gay, but gay हो भी गए तो क्या बुरा तो नहीं है। सर जब RSS कहती है गे ठीक है तो गे ठीक होंगे ना। अब आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने, and I would love to answer your questions, but I want to close by thanking you with the depth of my heart
that I am truly, truly honored that I am in this city where my grandfather lived all his life, where my father left for Pakistan. My French grandmother last lived on Pedder Street till she went back to France in 1966. Dadi Congress ke saath thi, Dada Muslim League ke saath the. I'm serious. My grandfather's brother stayed back, he was in the Congress. So it is the great tragedy of 1947 should never lead to recrimination, should be a lesson that आइंदा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की अगली 5000 साल की तारीख में we will not be betrayed by a criminal mind like Muhammad Ali Jinnah. We will stand and defeat such a man who was elected as a member of parliament from Bombay but who betrayed Bombay. And that will be his legacy for all times to come. Jai Hind. For question and answers, please make a line here. It's very difficult to travel to all of you. आपने हेट को हेट से हम हरा नहीं सकते। सॉरी आई थिंक हेट को हेट से आप हरा नहीं सकते, तो आप सोल्यूशन क्या लेंगे, कैसे हराएं? That's what you figure out. I don't hate anyone, and that is why I speak so well. If you eliminate hate, the answers will come to you. मैं तो हिंदू नहीं, आप है, तो आपका फलसफा है। मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे हेट करना इजाजत है, लेकिन मैं नहीं करता। सर, मेरा नाम दीपक बोल है, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ और 26 साल से चल रहा हूँ अपने देश में, और यहाँ मेरे सारे भाई बहन बैठे हैं देश के डिफरेंट काउंटी से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं। तो आप क्या हमें एडवाइस करते हैं, मतलब मेरे भाई बहनों को कि ये कैसे हमारी व्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं और कैसे हम हमारी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि जो आपका जो ये कथन था कि जो एजेंडा है इस्लामिक टेररिज्म का, वो एक्चुअली अगर देखा जाए हिंदुस्तान में कश्मीर से शुरू हुआ, वो उसका पहले पिक्चर में था। Let me answer that. What I feel is Kashmir. Kashmir was invaded by Pakistan in 1947. The territories that Pakistan today controls is occupied territories of the state of Jammu Kashmir. No Pakistani speaks Kashmiri, no Pakistani Kashmiri speaks Kashmiri, and it is a failure of India that it could not embarrass Pakistan in the national scene, rather than been stuck by saying it's a bilateral issue. If today the Indian government or the Indian bureaucrats, who I think have never read the Kashmir Security Council resolution, if they were to go and tell someone, we are willing to have a website, just ask Pakistan to withdraw its army. Pakistan can't withdraw its army because it's already subcontracted into China, which has 50,000 troops in Pakistan. But for that we have to be smart. And I don't think that India's IAS officers in foreign services are smart. They are more interested in how to retire, where to get the best house. I think if Mr. Modi could dissolve the entire civil service, India would shoot up into the future at a faster rate. So, but to answer your question about what I'm saying, without secularism, without the separation of church and state, without the celebration of secularism, India has no future. Anybody who suggests that there has to be some sort of rejuvenation counter to Islamism by rejuvenating Hinduism is walking up the wrong plank. You can't treat someone suffering from tuberculosis by injecting him with typhoid. Namaste. My name is Vishnu. I have a question I'm asking is purely
to get educated. Yes. Very well to say that you can't fight evil with hatred, but the other side, that is Muslims, particularly, if What we understand, if the non-acceptance of other faiths as equal, forget being superior, is embedded and killing or violence is embedded in Quran, how could you expect love or for that matter any portion to be useful or effective in winning them over? I never suggested you love. I'm just saying you will be resolute. You can't. If you think that Islam is the only religion that makes horses fly, then there are religions that make monkeys fly. And then there are religions that make snakes talk. And then there are religions that say there is no God. The issue is, where does law come in from? If you are going to counter Islamism by saying Islam is essentially evil, they won the game. And don't, no, you're asking a rhetorical question. Just a second, Indians are very good at that. They sneak in the statement in a question, but let it go. What is the essential problem that you face? Is it that my grandmother who believed that Muhammad flew on a horse to the moon, is that a problem for you? No. That doesn't bother anyone. My grandmother could do anything. Your grandmother or you may believe that a monkey could fly and bring a hill with a booty, and then find out instead of going over there, I would have said, well, take him to the mountain and get it. It might be more mechanically efficient that way. But it doesn't really matter. Your point of view is that nation states cannot have state religions. If nation states can't have state religions, then Muslim family law should be abolished. And if you are shy of demanding that as an act of equity or justice, then you have something devious in your heart. Otherwise, why would you be restrained? Does it mean that Muslim women suffering is acceptable, but Hindu women suffering is not? People in a nation state are equal in the eyes of the law, irrespective of what they believe. Whether they do palmistry or whether they do astrology, it doesn't matter. As far as Islam is concerned, let me put it this way. Muhammad and the first 10, 15 people who converted to Islam, at the time there was no Quran and there was no Sharia law. Could I conclude that you don't even need the Quran to be a Muslim? Yes. Does the Quran allow slavery and nobody practices it today? Yes. Does it mean that if I don't have slaves, I'm not a Muslim? No. Countless stages of Hinduism have been revamped for ages. You just come up to your senses, you're a practical person, who says, this doesn't work. Out. So if polygamy is an offense to you, then why aren't you saying polygamy should be banned in India? It doesn't matter whether you're Hindu or Muslim or Christian. But you have to make sure that it comes out not as hatred, because I can sniff it 10 miles away. हम भी हिंदुस्तानी हैं, यूं करते पता चल जाता है किधर से हवा चल रही है और कौन क्या सोच रहा है. Good faith or bad faith का concept जो है, you have to embrace it. Criticism made in good faith can never be defeated. Observations made in bad faith will have no mileage whatsoever. ये तो ऊपर वाले का कानून है, मैं क्या करूं? मेरा नाम देवानुज है, देव अनुज। मैं थोड़ा सवाल करता हूँ सर, जो आपने अभी बात कही है ना कि ये जो हेट है उसे हटाना जरूरी है, तो एक बात मैं सबके लिए यहाँ कहना चाहता हूँ कि हेट आप तब तक नहीं हटा सकते हो जब तक आप चीज़ों को गहराई में नहीं जानते हैं। ना तो ये बहुत बड़ा ट्रूथ है कि ना तो जो हिंदुइज्म की फाइनेस्ट ट्रेडिशंस के बारे में लोगों को पता है, ना इस्लाम की फाइनेस्ट ट्रेडिशंस के बारे में। दारा शिकोह जो है उपनिषद को वेस्ट तक पहुंचाने में कितना उनका एक बड़ा रोल रहा है वो नहीं। यार सवाल कर लो। हाँ, मैं बड़ा आसान होगा। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल पे आ रहा हूँ क्योंकि सर जैसे कि जो गुरुजी बैठे हैं ये मेरे पीर हैं, ये उस उपनिषद की ट्रेडिशन से कंटिन्यूस ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं जी।
पर शायद ही कोई जानता। तो मेरा ये कहने का मतलब, मैं ये सवाल कम है, ये आपका मतलब इस बारे में थोड़ा राय चाहता हूँ। सवाल पूछने तो मैं जवाब दूंगा ना। सवाल ये है कि बिना आपकी गहराई में जाए हुए आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये हेट खत्म होगी? मतलब मैं कोई हेट खत्म, देख मैं कोई मसीहा तो नहीं आया हूं हेट खत्म करने के लिए। मैं तो आपको एक बता रहा हूं आसान तरीका। श्री के पास चले जाइए, वो लंबा कोर्स करा देंगे आपको हेट खत्म करने के लिए। मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। मुस्कुराइए, खुश रहिए। अरे खुश होके दिखाओ, देखो मुस्कुरा रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। हंसते हुए चेहरे नहीं नजर आते दिल्ली की सड़कों पे। लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, हिंदुस्तानी मर्द सफेद जनाजे के कपड़े पहने हुए चले जा रहे होते हैं। Nobody smiles in this city. बड़ी जबरदस्त जगह है सर, ये तो लॉटरी में मिली हुई है आपको हिंदुस्तान। इसमें हेट्रेट करना आपका फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है। आपको किसी ने पैसे दिए अपने पित्ते को जलाने के लिए? मैं क्यों अपने आप को सड़ाऊंगा when nobody is paying for it? Hi, good to have you here. My name is Durgesh Kamane. I would like to ask you, like, most of the time during debates with friends, regardless of their religion, you come across something like, you always have some irrationality in every religion. So you always come across something like, "Nee, this is the wrong transcript, or this is the wrong translation you have read, and this is not the way you should do it." I have never said that. Not you, not you. Oh. Whenever I am debating with my friends, You mean with Muslim friends? not necessarily Muslim friends, say Christians, say Okay. Muslim, regardless of their religion. Huh. So you come across people that when you say something, Why do you debate that? just having a discussion, a group of friends. Debate the Constitution, which he or she would not have read. Say Debate a law. the Sharia law is basic. No, coming to it Sharia doesn't law. exist in India. Why are you debating something that has of no benefit? You should ask for the complete eradication of Muslim personal law. You don't need reason. What is there to argue? There's nothing to argue about Sharia law. It is inapplicable in the nation state. There is no place for Sharia law as a source of public law, whether it is how to park a car, or how to clean your streets, or how to elect a member of parliament. You want Sharia law? You practice it in your home. You step out of the home, there's public law. Law means anything that is written by elected representatives that can be changed by a future generation. Divine laws, whether they are Gita or the Quran, means they are immutable, they are unchangeable. Doesn't work that way, sir. Namaskar, sir. हाँ जी. मेरा नाम राहुल शुक्ला है. I am a big admirer, sir. You are one of the 2 Pakistanis I admire in my life. And I'm not Pakistani, but I'm Still, you देखो गाली दे दी फिर से. Yes, I have a 2-part question. जी, जी. So first part is particularly about Islam. Do you think Islam is a religion of peace? Yeah. Second The question. second part is, I am an atheist. Huh. So I want to learn about, I want to know about other religions as well, apart from, So I just want to, because you have said in the past that Quran is not in the chronological order. हाँ वो भी है. So मेरा just want to सवाल know, कर. how do I know, how do I go about Quran, एक सेकंड, Islam? मेरी Because बात. you said Quran is not in the मेरे chronological भैया order. आप बात तो सुन रहे हो ना एक. यार जब when you are fortunate enough to be an atheist, why do you go into what is right or what is wrong in holy text? एक आदमी तुमको पहले आजादी मिल गई है फ्रॉम स्लेवरी, उसके बाद तुम कह रहे हो कि यार स्लेव बनने का मजा क्या है? But to answer your question, Islam is both a religion of peace and war. Every religion का मसला नहीं है. The problem when we come to Islam is that we are spread over every country and 1 billion people. If every Sikh became crazy, we would have Khalistan. That's it. If every Tamil tiger became a fighter, we'll have Tamil Elam in the northeast of Sri Lanka. Or Nagaland people, they would have Nagaland. If 10% of Muslims became crazy, you will have a nuclear holocaust. That's the problem. It's not that one religion is better than the other. It's just that किसके हाथ में हथौड़ा है, किसके हाथ में न्यूक्लियर बम है, ये सारी बात है.
और एथियस्ट हो यार तुम। अरे नहीं यार, देखो ये वो बात है कि a sparrow who has been set free is hovering around and asking, you know, what if I get into that cage? How would I feel? निकल गए बात। हेलो सर, आई एम सारांश। मैं आपको ताहिर गोरा सर की डिबेट से जानता हूँ, जब अच्छा, यूट्यूब पे अच्छा। मैंने देखा था अच्छा। उसे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में हर कोई भी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत होती है जो क्रिटिसाइज करते हैं और भी सोसाइटी को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। बट इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स की बात करता हूँ तो हमेशा उनको ऐसे टॉपिक मिलते हैं जिससे सोसाइटी को कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाइक आई एम एन एथिस्ट, मैं देखता हूँ कि कोई मेरे लिए पूजा कर रहा है, मूर्ति को करे या बिना मूर्ति के करे, यानी आइडल वर्शिप करे या नहीं करे, मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, दोनों मेरे लिए बेवकूफ़ी है। बट यहाँ उनको टॉपिक ऐसा मिलता है कि आइडल वर्शिप गलत है, बल्कि मेरी नज़र में हाँ मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है, मैं 66 का हूं। ओके। मुझे सवाल बताओ ताकि मैं सवाल यह है सर कि जो मेन इशू होता है, जो सोसाइटी को प्रॉब्लम इसको होती जरा है, दूर रखो। हाँ जो मेन प्रॉब्लम है सोसाइटी की, जस्ट हाँ। लाइक रिलीजन अपने घर पे रखो, रोड पे मत लाओ। हाँ हाँ। चाहे वो कोई धूम धड़ाके वाला हिंदू ठीक है। फेस्टिवल हो या फिर कोई, सवाल क्या है मेरे भाई? प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि यहाँ पे केवल इसी बेसलेस टॉपिक को ही उठाया जाता है, कोई काम के टॉपिक को नहीं उठाया जाता। तो उसके लिए क्या किया जाए और उनकी लॉबी डोमिनेट भी करेगी। मेरी बात सुनिए, आपको जब इंटेलेक्चुअल बुरे लगते हैं कैमरे पे तो चैनल चेंज कर दें। हाँ हाँ, बड़ा आसान है। नेक्स्ट टाइम यू फील अपसेट एट समबडी टॉकिंग, चेंज द चैनल। किताब उठा दो, वो पढ़ने लग जाओ। कोई है यानी कोई पाबंदी है? बोले साहब इतना बक बक कर रहा था वो इंटेलेक्चुअल, मैं किताब नहीं पढ़ सका। अरे बंद कर दो, म्यूट कर दो, खत्म हो गया, वो खुद ही मर जाएगा। if you are not listening to him, he is talking to no one. But entertainment भी चाहिए ना। अर्नाब गोस्वामी provides entertainment. सर आप, मेरा नाम हेमंत है। मुझे एक यार ये लाइन बहुत लंबी होती है यार। सर एक सवाल पूछना था। मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई यार। अच्छा बोले बोले। आपने कहा था कि जो भी मतलब इस देश में रहता है उसको इस देश का कानून मतलब फॉलो करना चाहिए। हाँ। कोई भी धर्म का हो, इरिस्पेक्टिव। हाँ। तो इंडिया में आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसकी वजह या तो इस देश के इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो लोग इसको अपोज करते हैं उनको समझाने में कम पड़े हैं, या हम बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो गए कि हमें इस देश के कानून पे कोई भरोसा ही नहीं रहा है। मैं समझ गया मैं बात। देखें, आप देश के कानून की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश का कानून। अच्छा हाँ, इट इज सर। आप पे तो नहीं कुछ कह रहा ना, आप मुसलमान तो नहीं है ना, तो आप पे कोई तकलीफ नहीं है। अब मैंने जवाब आपका दे दिया। अब आए रिटोरिकल क्वेश्चन के बजाय आपका सवाल ही होना चाहिए था कि इसको हटाएं कैसे। लेकिन हर इंडियन स्मार्ट बड़ा होता है, दो चार गोलियां फेंकता इधर उधर, कटर वटर मार मूर के फिर बम्पर मारता। सीधा सवाल था आपका कि मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉ को हम कैसे हटाएं। अच्छा, तो उसका मैं आपको नुस्खा दे देता हूं। 70,000 औरतें कह रही हैं कि ये हटाना है। आपका काम है उनके पीछे चलेंगे आप औरतों के पीछे? अभी तक तो कोई नहीं चला। Those 70,000 Muslim women do not have a single non-Muslim behind them. Those 10 women who have become qazis in Rajasthan, nobody is supporting them. आपको भी चस्का लगा हुआ है कि जरा कंट्रोवर्सी हो ताकि मैं कुड़ क्या कहूंगी, कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे। अरे भाई ये तो आपके हाथ में। और ये क्यों हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ? लेट मी एक्सप्लेन दैट टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स। 1947 में पूरे पाकिस्तान से हर हिंदू की ऐसी तैसी करके निकाल दिया, ट्रेनें भर भर के दे वर रीचिंग इंडिया। पूरा पंजाब सिखों और हिंदुओं से खाली हो गया। यहां पे डर उस वक्त था पटेल को या नेहरू साहब को या इंक्लूडिंग मिस्टर गांधी हु वाज डीपली डिस्ट्रेस्ड अबाउट व्हाट हैपेंड इन कलकत्ता, कि अगर ये रिएक्शन इंडिया में हुआ कि हम बदला लेंगे तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। हैदराबाद के अंदर tens of thousands of Muslims died. वो रिपोर्ट आज तक, it is because people rebelled against the rule of the Nizam
and the Muslim community that supported that minority rule. The state of India at that time decided, and उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे बड़े बड़े नवाबों के घरों में कई कई बीवियां होती हैं, फिर एक छोटी दुल्हन आती है, उस दुल्हन को छोटी दुल्हन कहा जाता है, उससे बावर्ची खाने का काम नहीं कोई लेता, वो बन के बैठी रहती कोने में, उसको मलाई खिलाई जाती, उपटन लगाई जाती, क्योंकि राजा साहब को शाम को उसके साथ जरूरत भी पड़ती है, तो वो भोली पप्पू बन के बैठी रहती है। तो मुसलमान जो थे इस मुल्क के, वो छोटी दुल्हन हो गए। They were vulnerable. They could have been annihilated. Mass killing could have ensued right up to the 51. It could have been a slaughter. That was stopped by in giving them certain rights through Bollywood and through the Indian Constitution. These are two institutions that saved India. Now, the fact is that that Choti Dulan has now become a saas. And you are still treating her as the Choti Dulan. उसके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं कि हाय लाओ हमको चोट लग गई, ओवैसी साहब को दर्द हो गया. You are not treating Muslims as adults. Nobody is confronting these. They are scared. आप मुझे एक मुसलमान बताइए जो सेक्युलर लिबरल है जिसको कोई टीवी पे को बुलाता हो. दो चार को तो मैं जानता हूं जो टीवी बुला रहे थे, ग्रीन रूम में कुछ और बात करते, टीवी पे कुछ और बात करते. मैं क्या नाम लूं? पैनल पे झगड़ा करके जब खत्म होता है तो एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते, बड़ी अच्छी रही शो आज. When your intellectuals are dishonest intellectually and they are willing to lie to get on television, and when Taslima Nasreen has to live in fear of her life in India and not a single Hindu is willing to protect her, तो आप क्या कंप्लेन कर रहे हैं? आप में दम है तो जाएं बोले तस्लीमा नसरीन खुल के सामने आगे देखे कौन हाथ लगाता है. जब उसकी पिटाई हुई तो आप आए थे बचाने. वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने निकाला और ममता बनर्जी ने निकाला. आज वो दिल्ली के अंदर एक 6 स्टोरी बिल्डिंग में अकेली रहती है फ्लैट में, विद अबाउट 20 पीपल गार्डिंग हर. ये कोई जिंदगी है? कौन आया सामने? मुझे बताइए कौन आता है तस्लीमा नसरीन को? हर एक को पढ़िए, साला वोट कट जाएगा अहमदाबाद का, फलाने डिस्ट्रिक्ट का वोट घट जाएगा, साला हैदराबाद में क्या होगा. अरे इलेक्शन को छोड़ो, बोलो ये औरत रहेगी, ये हमारी देश से है, ये बंगाल से, और बंगाल हिंद है. बंगाल नहीं है तो साला हिंदुस्तान क्या है? कहां चले गए नेताजी आज के? है ही नहीं कोई. और ये तीन जो है इन्होंने ऐसी जान नहीं दी थी. बीच वाला लाहौर का मरा हुआ, हिंदुस्तान का नहीं है, हमारा आदमी है. ये भी नहीं पता किसी को है, सादा बंदा है भगत सिंह. They died to speak the truth. You are living to be a CEO. Yes, so he did it. What did you do? What did you do? You re-elected Rajiv Gandhi. Doesn't matter. Your parents did, their grandparents did. You are slaves of a woman who is Italian and whose supporters say that Tarek Fatah is not Indian. Sonia Gandhi is Indian, I am not Indian. Bhaiya, jaane dein. Please address the issue. If you can't put Taslima Nasreen and Salman Rushdie at a literary conference in Jaipur, shame on India. Salman Rushdie India में नहीं allowed है. साला ये शेकड़ी मेकड़ी कचरे जैसे लोग एक जायंट के सामने कहते हैं इंडियन नहीं है. सलमान रुश्दी इंडियन नहीं है तो कौन इंडियन है? तो अपने गिरेबान में जाको, तुमको बड़ा डरावने लोग नजर आएंगे वहां. डरपोक, और हर डरपोक कहता है असल में मैं हूं इंटेलेक्चुअल, प्यार से मुझे लोग डरपोक कहते हैं. Hello sir, my name is Tawqir and मुझे पानी पिला दो यार, करबला बनाया हुआ शिया समझा हुआ है क्या मुझे? जी जी. Sir, I just wanted to say that I came here because I thought this discussion would be healthy
but what I found, it was not, I mean, it was nothing more than what's happening in the social media right now. It was bashing this guy or that guy, this religion or that religion. I mean, I just don't take Which it offense. religion? I mean, any religion. No, no, I'm not bashing. I have not bashed any religion. You didn't bash any religion, but you said that, I mean, one should hate this guy is enemy of this guy. आपको पता ही नहीं मैंने क्या बोला. I understood everything. No, no. Yeah, you're नहीं मेरे भाई. You're just नहीं. No, you're dodging ये my आंखों पे question. पर्दा पड़ा हुआ है. You're dodging my question, sir. Please आप listen. क्वेश्चन ही नहीं कर रहे तो मैं. I'm just commenting. I'm not. ना तो क्वेश्चन करें ना. Yeah, I'm just commenting. I just first want to comment. हाँ, okay. Yeah. So I thought this would be a healthy discussion in an academic institution. नहीं, I'm not Because an this is- academic. Yeah, no, you're not an academic, but this is an academic institution. हाँ, तो मुझे I thought निकाल this is- दीजिए यहाँ से, Yeah, please. No, no, I'm not. भैया सवाल करो. Yeah, sir. My question हाँ. is, please pardon me, but have you not understood at the age of even 66 that people should promote love among other people and Yeah, let me answer that. rather than Yeah. hatred? Yeah. That's what he said. The question was, just a second, the question was, have you not understood at the age of 66, yani you are a Buddha, so why don't you understand? The answer is no. Hi, my name is Sagar. I wanted to ask a question. Yeah. We spoke about religions, a lot of religions and how to solve the Yes. issues. One of the things is language, I believe. In India, Muslims are told that from whatever region they belong, they are forced to speak in Urdu. Or if may not be forced, but they think that Yes. Urdu is their language, Yes. even if somebody is Tamil or other. Yeah, I understand. So what can we do so that they will speak the same language as the others do, and then they mix with the society and come together? It's a very pertinent question, and as I said, that 33 million Muslims were killed just for the right to speak Bengali. And the people who wanted these people to speak, not speak Bengali, were Urdu-speaking Muslims of India. They were not Pathans or Punjabis. They were people from UP, CP, Bihar, the Nawabs and all that, who still, I remember Bangalore ke andar, there was a debate of why there is no Urdu radio station. And the people can't speak Urdu, but they want an Urdu station. Urdu has become a curse on India, because if it was an Indian language, it would have an Indian script. So if Urdu lovers, whether it is Firag or whether it's others, should insist that Devanagari should be introduced as the script of Urdu, then it becomes an Indian language. तो पंजाबी तो है क्या? अरे यार एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड. Why? He made a mistake. Yes. Absolutely. It is a language. This script. Just a second. No, just a second. 1 second. Hold on, please. It's not for you. Let me address the issue. The language of Persian and Arabic is a colonial oppression of the people of India. Do you understand that? You understand that? You won't, because your contempt for India stems from the fact that you do not want to even accept that a language script has nothing to do with it. Urdu is a new language. It has come out of Khadi Boli and Hindustani and Hindi, and it's based on Sanskrit. It has got nothing to do with Arabic or Persian. Who cares? Who gives a damn? Who gives a fucking damn? You sat there in the Red Fort as a minority and ruled 800 years over Hindu majority, and you are defending that as democracy? How? I didn't say your name. You appear, dekhe mere bhaiya. I can tell you exactly where you come from. Absolutely from an Urdu-speaking apologist family of India. Yes.  1
एक सेकेंड, और ये भाषण किसी और को देना, ये मैं कोई हिंदुस्तान का हिंदू नहीं हूं कि तुमसे डर जाऊंगा तुम्हारी दादागिरी। तुम मुसलमान हो, ये याद रखना बेटा, तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा बाप मैं हूं मुसलमान, और मैं सच बोलता हूं और तुम झूठ बोलते हो। I forgot your question. My question is, how do we make Muslims speak Indian languages? Muslims speak Indian languages. All Muslims speak Indian languages. Okay, just a second. In the Indian subcontinent, the largest number of Muslims live where? Take a guess. अब भाई इंडिया के अंदर यार इसको बंगाल, what do they speak over there? उर्दू? पागल हो गया क्या? शोंग राम चौलवे चौलवे सुना है? जनता शोंग राम चौलवे चौलवे, ठीक है, एक बंगाली तो है यहाँ। They died to defeat उर्दू। बलोचिस्तान में ये उर्दू बोलने वाले किसको मार रहे हैं? Do you think they speak उर्दू over there? They speak बलोची। इंडिया में कौन उर्दू बोल रहा है? उर्दू के इलाके में तो उर्दू बोलेगा ना यार, यूपी में तो उर्दू ही बोलेगा, बिकॉज उनके माँ बाप को नौकरी मिल गई मिडिल ईस्ट में, अरब उन पे थूकता है, तो अरब के बाद सेकंड रेट आता है पाकिस्तानी, उसके वो क्या कहूं मैं। नमस्कार सर, माई सेल्फ एडवोकेट सुमित देशपांडे। धीरे अलग करके बोले। या सो मेरा एक क्वेश्चन था अभी, या आई फॉलो यू ऑन यूट्यूब और एंड ऑन सोशल मीडिया। तो फिलहाल आपका जो कनाडा में जो सेनेट कमेटी के सामने आपने अपनी राय रखी है, उन्होंने आपको बुलाया था, राइट जी? तो मतलब उनका वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली, और वो कंपोजिशन कैसा था उनका, लिबरल कंजर्वेटिव इक्वल बैलेंस था, कैसा था? एंड सेकेंडली एक और क्वेश्चन कि आप ये जो रॉबिन रफाइल जो थी जी, हाँ, जिनको अभी पकड़ा है सीआईए ने, तो आई मीन ये आईएसआई ने दुनिया भर में इतने लोगों को अपने पेरोल पे कैसे रखा? हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। पहला सवाल भूलवा दिया, क्या था? हाँ, कैनेडियन सेनेट का। देखिए, कैनेडियन सेनेट की any parliamentary committee like Indian Parliament is comprised of the majority party holding the majority number of seats on that committee and a minority. This person, the senator with whom I had that agreement, was from the Liberal Party. Every liberal and left-wing white person today is suffering from Sharia Bolshevism. वो समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी फ्रीडम फाइट है, ब्लैक सिविल लिबर्टीज मूवमेंट है, जिसमें हिजाबी और निकाबी औरतें आर द जोन ऑफ आर्क। Everyone who goes there from our community, ये जो इंडियन, पाकिस्तानी, मुस्लिम, हिंदू, सिख सब है, ये जाते हैं मस्का लगाने। गोरे के सामने कभी को खड़े होकर बोलता नहीं है। घोड़ा कहता है ना सीट से उठ जाओ तो कहते हैं ठीक टू, मैंने यहाँ पे भी देखा। The issue is that no non-Muslim has understood the phenomena of Islamism. That India में Muslim Brotherhood की जो links हैं campuses में, in parliament, in political parties is very deep rooted. जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, आप मजे की बात देखिए, जमीयत उलमा हिंद कहती सेकुलरिज्म मस्ट, जमीयत उलमा पाकिस्तान कहती सेकुलरिज्म डेड. The dishonesty of the Muslim political leadership is what is destroying the world. When these white politicians listen to someone saying that every Friday there are Muslims praying for the victory of Muslims over the Qawmul Kafirin, that's happening in India as well. But who's going to bell the cat? हाँ, मैं तो करूंगा, मेरा तो काम है, मेरी बदनसीबी है, मैं करता रहूंगा। लेकिन बेतहाशा मुसलमान जो लिबरल सेक्युलर कहलाते, वो इस धंधे में कि पैसा कितना मिलेगा इसका, गवर्नमेंट की फाउंडेशन कितनी देगी, ट्रिप कितना लेगा, किताब छपेगी नहीं छपेगी. There's a whole industry of Muslim divas who going around the world saying, I am stifled in the Islam. No, you're stifled under your dishonesty. क्योंकि बगैर मुसलमान हुए आप जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड को नहीं लड़ सकते. आपको पता ही नहीं है हरकतें क्या कर रहे हैं. ये 1920 से लगे हुए हैं, तो इनको ना कुछ बनाना आता है, इनको तोड़ना आता है. ये व्हाइट हाउस में घुसे हुए हैं. और मैं बता दूं, हिलरी क्लिंटन जीत गई तो यू वुड हैव हैंडेड ओवर द व्हाइट हाउस टू द मुस्लिम ब्रदरहुड बिकॉज चीफ ऑफ स्टाफ इज उमा आबिदीन.
whose father is Indian, mother is Pakistani, was born at 2 years of age. The father and mother thought America was not the right place to grow up a woman. They took her to Saudi Arabia. She edited her father's Motamar Alam Islami journal. She was with the Muslim Students Association, a product of the Muslim Brotherhood, and she's going to be the next chief of staff of Hillary Clinton. जितने romantics हैं यहाँ left wingers, उनको समझ में आना चाहिए कि what it means. It's a big crisis at hand. But until and unless Muslims take up the fight against Islamism, we cannot win. As long as there are anti-Muslim, non-Muslims attacking Islam, the Islamists will win. Robin Rafal. Take a second. You know what happened to Robin Rafal today? Do you know? Does everyone know who Robin Rafal is? Okay. Assistant Secretary of State under Secretary of State Hillary Clinton. Ex-wife of Mr. Rafal, who died with Ziaul Haq in the air crash, the American ambassador to Pakistan. Mrs. Rafal was found with State Department files in a hotel room that ended up with the Pakistan eyesight. Today she was dismissed. She was dismissed, but today the Justice Department said they were not going to charge her. Why? Because if they charge her, the entire nexus of Pakistan eyesight operation in the United States would be exposed. And everyone who has accidentally received $1 million in their account from the Pakistan ISI would also stand exposed. The point is that while the Indians even asked their soldiers to give an account of bullets fired on the LOC, the Pakistanis simply start the machine gun like a water sewer and go away. And all night that is playing. आप एक कंजूस मक्खी चूस, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो गोरे खर्च रहे हैं, वो जिसको बोले इंडिया में मैं कितनों को बता दूं, आपको वो मंकी शायर क्या नाम है, मंकी, इसका नाम क्या है जो साउथ का एमपी था, मंकी शंकर, मनी शंकर, सॉरी, उसका क्या काम था कराची में, उसके सारे दोस्त पाकिस्तान से क्या ससुराल में लेके आया, जहेज में मिले उसे, सारा तमिलनाडु का आदमी कराची में बैठा हुआ है। चल देखिए, चलें, तो that is how it works. It will be the last question. जी. Thank you, sir. Sir, I just wanted to know कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम की सिचुएशन होती है कि अगर उनकी आइडेंटिटी में वो ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि क्या चीज है जो उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी को कंट्रीब्यूट करती है और क्या है जो कि एक तरीके से आप कह रहे हैं अरब से कॉपी करते हैं जाकिर नाइक की तरह। हाँ, अपने बच्चों के नाम अरबों के बजाय हिंदुस्तानियों के रख दे। आपने सुना होगा हिंदुस्तान में शमसुद्दीन नाम के बड़े लोग हैं, तो कुछ सूरज नाम का भी सुना है मुसलमान? सूरज और शम्स तो एक ही चीज हो है ना, एक अरबी लफ्ज है और एक हिंदी का है, तो कोई तो रखे नाम अपना सूरज, आफ्ताब रखते हैं, चांद नहीं रखता कोई, जब तक कि गरीब ना हो। चांद बाबू था वो टीवी रिपोर्टर जो, याद है, तो उसकी शक्ल देखी थी, चांद जैसी थी, अगर वो पैसे वाला होता तो उसका नाम होता आफ्ताब। जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान अपने बच्चों के नाम जिद से नॉन हिंदुस्तानी रखेंगे, वो आउटसाइडर रहेंगे। जब वो जिस दिन नाम अपनी बच्ची का रख दें दिलकुश या ऐसा कुछ ज़ोरास्ट्रियन रख दीजिए, मेरी बेटी का नाम मैंने रखने का सोचा था लक्ष्मी, माय गुडनेस, ऐसे लगा जलजला आने वाला पाकिस्तान में, मेरी ससुराल वाले तो मर गए कि अब बड़ा खाने पे दावत नहीं आएगी, तो मैंने फिर डिलिबरेटली दोनों बेटियों का नाम नॉन अरब रखा, बड़ी का नाम नताशा है, छोटी का नाजिया। तो यही कर सकते हैं इंडिविजुअली कि यू असर्ट योर इंडियन आइडेंटिटी। मुसलमान होने से नाम बदलना इज टोटली अन इस्लामिक। अली भी नॉन मुस्लिम नाम है, उमर भी नॉन मुस्लिम नाम है, उस्मान भी नॉन मुस्लिम है, ये पेगन अरब नेम्स हैं। तो जब ये पेगन अरब नेम्स हैं तो भैया अपना संतोष रख दो ना, दिलीप कुमार भी तो था ना, उसका नाम, तो अपने बच्चों को दिलीप क्यों नहीं रखते हो? संतोष रख दो, अशोक रख दो, ऐसा थोड़ी है कि हर हिंदुस्तानी नाम किसी भगवान के साथ एसोसिएटेड हो, इतना ही है तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे बच्चे का नाम किसी हिंदू गॉड से एसोसिएट हो?
अकल ही आ जाएगी ना थोड़ी और उसको, एक मजहब को जाए 2 सीख लेगा। ये कैसी बात है, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री हर जगह होता है, यहां हम कह रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री तो लोग चिढ़ते हैं। अरे एक क्या 3-3, ये हिंदुस्तान है भाई, 5-5 मजहब रखो भाई। सिखों की भी देखो, क्या बड़ा आदमी पैदा किया हिंदुस्तान ने, गुरु नानक, क्या ग्रेट, यानी बुद्धा को देखो यार, कैसा आदमी। तो आप बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि एक ही रखे। ये तो हिंदुस्तान की बदनसीबी, हर आदमी का एक रिलीजन होता है। मैं तो 4 बीवियां रखता हूं तो 4 मजहब पे रखो। On behalf of everyone gathered here, I thank our speaker, Sri Tarek Fatah, for enlightening and thought-provoking lecture. I thank the faculty, students, staff, and other audience who gathered here. Thank you. Thank you all.